Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss how to use the question answer session to your advantage. This is the question answer session which is at the end of presentation usually, और इसके लिए भी 5 minutes approximately for an average presentation रखे जाते हैं, where the audience can ask you any kinds of questions if they have any ambiguity or any confusion or they want clarity for any of the points of the presentation. So these question and answer sessions can drag very long अगर आप बहुत technical चीजें discuss कर रहे हो, and sometimes controversial questions होते हैं, sometimes there are difficult questions, sometimes the audience doesn't know how to phrase the questions, and due to that बहुत ज़्यादा इसमें भी आपका reaction जो है उससे उसकी वजह से modify हो जाता है, but still it is a necessary skill that you should be able to handle the question answer sessions with the same kind of politeness and friendliness with which you have given the presentation. So in presentations, you have to answer different types of questions because this helps summarize the information for the audience. It stresses your main points, clarify any misunderstandings agar koi hain, and reinforce your recommendations. So these are the main purposes कि जिसकी वजह से question answer sessions encourage किए जाते हैं. Even at conferences, जब आप पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं about your researchers, तो तब वहाँ पे भी open एक opportunity होती है for the audience members to ask you any kind of questions about your research work or your presentation. So this is a necessary skill you have to build. So there are certain kinds of questions which you may encounter. Some are good questions, some are difficult questions, and usually many are unnecessary questions. There are no bad questions, right? So good questions kya hain? They enable you to reinforce and elaborate what your message was. तो उसमें आपको अपना response इस तरह से शुरू करना चाहिए. That's an excellent question. That's a very good questions. I'm glad you asked that. और इस तरह की चीजें, ठीक है? Difficult questions कौन से होते हैं? जो थोड़े confrontational हों, जो थोड़े argumentative हों, या जिसमें controversy भी आ जाए. They are designed to embarrass you or challenge you, confuse you or discredit you, maybe. Yeah, they are just checking. यानी आपके जो defense, PhD defense वगैरह में, they are difficult questions just to check your understanding and credibility भी आपकी check करने के लिए. If you don't know the answer, you might say, I'm afraid I don't have that information with me. If you prefer not to answer, you could say, I'm afraid I'm not in the position to comment on that. Lekin, it's still very important that you be friendly and very polite and very open when you're answering. Unnecessary questions, usually time consuming or repetitive होते हैं. I think I answered that earlier. इस तरह की बात करके आप उसको गोल-गोल कर सकते हैं या आप इसका brief सा answer भी दे सकते हैं, but still you have to acknowledge them. So यहाँ पे जो important चीज़ है वो for the presenter is that you have to stay in control of the entire presentation as well as the question and answer session. ठीक है? You are the one who decides how many people to call on. 4 questions चाहिए, 3 questions चाहिए, or maybe 2 questions चाहिए, or 10 चाहिए. You are the one who chooses how much detail to provide in your response. और इसमें यहाँ पे again अगर कोई बहुत drag on करे question, तो you can ask that person that you can have a separate meeting, और आप उनसे कहें कि they can come and see you at any time, and whatever information you've given उनके साथ आप share कर लें. Start by listening carefully to the question and nod to show that you understand and are paying attention. ठीक है? अब अगर वो लंबा question बोल रहे हैं, फिर भी you have to be very patient for them to complete the question. Don't roll your eyes or sigh in exasperation कि हाय अब मुझे बोलना पड़ेगा, जो भी. These are insulting signals. ठीक है? Always repeat the question. क्यों? क्योंकि sometimes when the questioner, when the person is asking the question, वो stage के पास होते हैं और usually कभी mic काम कर रहा होता है, कभी mic काम नहीं कर रहा होता, तो वो जो है सब audience तक वो question नहीं पहुंचा होता, और आप इसी तरह से उनको अगर answer देना शुरू कर दें तो without context बाकी लोगों को समझ नहीं आएगी कि किस बारे में, ये किस exact point पे बात की जा रही है. एक तो ये चीज़. दूसरी ये चीज़ है कि it brings attention back to the audience. Of the audience back to you, क्योंकि जब वो क्वेश्चन करने वाला शख्स बोल रहा होगा, हर कोई उस पे देख रहा होगा और उस पे पता नहीं किस किस्म की बात हो रही होगी या किस तरह वो खड़ा होगा बहरहाल. लेकिन एक फोकल अटेंशन आपको बनाने के लिए उसको जो है फॉरन रीडायरेक्ट अटेंशन कर लेता है अगर आप उसका क्वेश्चन रिपीट करना. ठीक है? एंड थर्ड, इट गिव्स यू टाइम टू थिंक ऑफ हाउ टू आंसर. पहली बात ये कि सबको सुनाई दे, दूसरी बात ये भी कि आप पे अटेंशन दोबारा आ जाए, और तीसरी बात ये कि
आपको कुछ सोचने का मौका मिल जाता है, और बजाय कि आप करके या गैप दे के उसको करें, आप क्वेश्चन रिपीट कर दें, वो शायद आपके लिए भी क्लैरिटी का बायस होगा. Remember to stay on track and answer the specific question. If one person tries to ask several questions, तो आप उनको कहें कि you can meet them privately afterwards, और दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए. अच्छा, अब यहाँ पे मेंटेनिंग एक विजुअल कंट्रोल भी जरूरी है. आप अपने लिए विजुअली भी आप सीख लगें, जैसे अडॉप्ट अ कंफर्टेबल पोजीशन वेयर यू कैन लुक एट ऑल सेक्शंस ऑफ द ऑडियंस, कि कहीं से भी आपको क्वेश्चन आए, सो यू आर मेकिंग आई कांटेक्ट विद द पर्सन. ठीक है, आई कांटेक्ट टेक्निक्स भी हों, आप उनको अफर्मेटिव में जवाब भी दें, सर हिलाएं, अपनी अंडरस्टैंडिंग शो करें, ओपन बॉडी लैंग्वेज यूज करें. यूज वॉकिंग पैटर्न्स टू फोकस एंड रीफोकस अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. अगेन, अब आप एक जगह खड़े होकर बहुत लंबा आंसर देंगे, अटेंशन चली जाएगी, आप इधर जाएं उधर जाएं, को पुरानी स्लाइड को रेफर करना हो वो शो कर दें. सो दिस इज हाउ यू मेंटेन द विजुअल कंट्रोल. देन वर्बल कंट्रोल किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं? व्यू द क्वेश्चन एंड आंसर पीरियड एज एन अपॉर्चुनिटी टू रीइंफोर्स योर मेजर पॉइंट्स. अब आप वहां पे ये कहें कि हाँ बहुत अच्छा हुआ ये क्वेश्चंस हुए, क्योंकि इससे आपको मौका मिल गया कि वही पॉइंट्स जो आप इंपॉर्टेंट समझते थे उनको आप दोबारा कह सकते हैं. रीस्ट्रक्चर द डिफिकल्ट क्वेश्चन सो यू कैन आंसर देम टू योर एडवांटेज. कभी कभी क्वेश्चन इतना लंबा होता है, क्लियर नहीं होता, मगर जिस तरह से वो आपको सूट करता है आप उसको रीफ्रेज करके अपने हिसाब का बना सकते हैं. Listen to the intent of the message instead of the tone. अगर किसी ने बड़ी सख्ती में भी बात की है, but still they're asking questions, this means that they want to develop understanding, they are interested in your work. तो उनके मैसेज पे ध्यान दें, टोन पे नहीं. Keep your answers brief so as not to appear to be defending yourself. ठीक है, खासतौर पे confrontation और difficult questions में लंबे लंबे वजाहतें नहीं देनी. You have to give to the point answers. और obviously अगर आपके answers फिर इस तरह के लंबे लंबे हो जाएंगे, तो जितनी interest और जितनी अच्छी presentation हुई होगी उसका असर फिर खत्म होना शुरू होगा. ठीक है, remember that a speaker is judged from the moment he or she enters the room until the last question is answered. So be polite, helpful, and professional in answering questions. ठीक है, this is I think pretty clear. What I need you to do is there is another handout and another video I'm going to make for Handout 16.1. You listen to that, watch that one too, and then we can have a discussion on the WhatsApp groups. I hope this was very clear. क्योंकि बहुत straightforward चीजें थी. And have a nice day. Assalamu alaikum.